इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई इम्पोर्टेन्स नदिएर त्यसको प्रोपर्टिजलाई इम्पोर्टेन्स दिनुभएको थियो, त्यसलाई इनर्ट ग्यास भनेर 0 ग्रुपमा राख्यो, यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको इम्पोर्टेन्स दिएन। तर यहाँ हाइड्रोजनको बेलामा के भन्दैछ, देयर इज द इम्पोर्टेन्स अफ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, जो 1s1 छ, दैट्स व्हाई इट शुड बी द प्लेस इन द 1a, जबकि यसको प्रोपर्टिजको हिसाबले यसलाई राख्नुपर्ने नन मेटल ग्यासियस स्टेटको साथमा, भन्नाले इट शुड बी द प्लेस इन द 7a, यसलाई 7a मा राख्नुपर्ने। इज इट क्लियर? एउटा यो कुरा। अर्को पोइन्ट के आउँछ, when the hydrogen reacts with the any electronegative element, जसरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यो बनाउँछ, यसलाई जब हामीहरू आयोनाइज गर्छौं it will form the H plus and Cl minus, H plus and Cl minus. अब यो H plus and Cl minus is there, it means what will happen, यो हाइड्रोजन पोजिटिभ चार्ज means केटाइन जसले फलो गर्छ भने it should be the kept in the 1a, जसरी NaCl लाई हामीहरू ब्रेक गर्छौं भने it will form the Na plus and Cl minus. त हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट जस्तै बिहेभ गर्यो, that's why it has to place in the 1a group. भन्छ when hydrogen reacts with the electronegative element, it behaves as electropositive. तर when the hydrogen reacts with the electropositive element, जसरी सोडियम हाइड्राइड बनाउँछ यो, when it form the what, सोडियम हाइड्राइड NaH, यसले सोडियम हाइड्राइड जब बनाउँछ, ठीक छ, जसरी यसलाई बनाऊ हामीहरू when it form, यहाँ छ, यहाँ लेखो NaH सोडियम हाइड्राइड, यसलाई आयोनाइज गर्छ भने it will form Na plus and H minus. अब यहाँ हेर, हाइड्रोजन जुन छ it start to behave as electronegative, भन्नाले क्लोरिन जस्तै बिहेभ गर्यो, भन्छ यो प्रोपर्टिजले गर्दा यसलाई राख्नु पर्ने 7a मा, ठीक छ। यसैले पोजिसन अफ हाइड्रोजन कन्ट्रोभर्सियल छ, यसलाई 1a मा राखौं या 7a मा। दिस इज द comment on the position of hydrogen. Wait कर, is it clear? Write down position of hydrogen. Dimension first में लेगा position of hydrogen. Right. Position of hydrogen. Position of hydrogen. Position of hydrogen is the demerits of modern periodic table, is the demerits of modern periodic table because of following two reasons. Because of following two reasons. Because of following two reasons. ठीक है, फर्स्ट लेकर फर्स्ट में according to electronic configuration, according to electronic configuration, it should be placed, according to electronic configuration, it should be placed, it should be placed, according to electronic configuration, it should be placed in 1a group. It should be placed in 1a group. 1a group. आप चेंज कर ले, यो हेराई दिने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, सो ब्रैकेट में रख दियो 1a. यही पॉइंट में आप चेंज कर लेगा। being non-metal and gaseous state, being non-metal and gaseous state, it should be placed, it should be placed in 7a group. It should be placed in 7a group.
should be placed in 7A group. Now right, second point. When hydrogen reacts with electronegative element, when hydrogen reacts with electronegative element, it behaves as an electropositive. It behaves as an electropositive. It behaves electropositive. Behaves as an electropositive. So it should be placed in 1A group. So it should be placed in 1A group. In 1A group. In 1A group. Example में यो हेराई दिने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Yes, रिएक्शन लिख दियो हाइड्रोजन प्लस एंड Cl माइनस. यहाँ तलर नाम लिख देने हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन. ठीक है. Now change the path and write. When it reacts with electropositive element, when it reacts with electropositive element, when it reacts with electropositive element, it behaves as, when it reacts with electropositive element, it behaves as an electronegative element. It behaves as an electronegative element. It behaves as an electronegative element. अब खाना खा जाते हो क्या मोहन पिता बना. Yes, example में ये लिखते हैं NaH gives out Na plus H minus. Last class में होते जब कमल. Became next measure. You were position of hydrogen. Any confusion Kasalai? Now see. Another demerits happen. 3 elements are there. 3 elements are kept together. In a period of 8 group. यो मेनलिप में पनि थिए यहाँ पनि छ. ठीक छ. पोजिसन अफ हिलियम नैले भर्खर भन्यो पोजिसन अफ हिलियम मा के छ. पोजिसन अफ हिलियम according to electronic configuration it should be placed in the 2A. जुन तिमीहरुले प्लेस गर्यो एकदम राम्ररी प्लेस गर्यो तर it has been being inert gas kept in the 0 group. So okay, according to electronic configuration it should be kept in 2A group, but being inert gas, it is kept in 0 group. It is kept in 0 group. Next demerits if you see lanthanides र actinides लाई बाहिर राखेको छ. The lack of
position of lanthanides and actinides. Lack of position of lanthanides and actinides. क्योंकि lanthanides and actinides we have studied, it is kept outside. यो periodic table भन्दा बाहिर राखेको छ. These are the demerits of the modern periodic table. Again, okay, Ankit. Became all clear? Okay. आज यति के रहने यता यति complete करने, right? Our Sunday periodicity. Periodicity बनाले variation of properties कसे कसे हामीहरू गर्छौं. That will be the going through. Is it clear? केही छ confusion? भन. यति पढाए यतिमा अहिलेसम्म केही confusion केही problem? किन ढिलो आएको कमल? सर गए थे खाना खा रहे थे. तो खाना खाए थे तो खाना